uh, I wish to interact with you, I would take up questions, and for that, the center stage would be fine so that I can connect with you all. But the problem here is this is the whole system is connected. It is being recorded so that you can listen to it afterwards as well, while you'd be revisiting your the whole curriculum, as well as you would be revisiting what exactly was needed to be done at the very beginning. So we are just trying to prepare ourselves. Ourselves means all the MBA fresh batch. Uh, that whatever you do, whatever you prepare for yourself right now, during the lectures and after the lectures, you keep on adding multiple things uh, in your profile uh, once your base has been prepared through LinkedIn. Now, I have a very specific question, that how many of you are on social media? Acha, let me, all the hands are up. How many of you are not on social media? Okay, as expected, none of you are unaware of the circumstances, what exactly is going around. So, uh, those who have studied BBA from here, they know that there had been one subject, that is social media ethics. Those who have not studied from here, from Jamia Hamdard, they might have studied it, they might not have studied it, but still I can be sure enough that every one of you have fair understanding of how to connect with people on social media. So let's hear it out from you, that what are the different social media platforms that you have been using for long enough, or maybe very recently you have joined. So, what is the most popular social media platform that is available? Instagram. Are you sure about it? Instagram? Okay, fine. One is Instagram. Let's not prioritize it right now. Second one? Twitter, Facebook, Snapchat, right. फेसबुक के ज़माने में कौन कौन जी रहा है अभी? अच्छा नहीं, दैट्स नॉट आउटडेटेड ऑफ कोर्स. हम तो उस ज़माने से आते हैं जिस ज़माने में ऑर्कुट चला करता था. ऑर्कुट कितने लोगों को पता है? बाकी लोगों को ऑर्कुट नहीं पता है. फेयर इनफ. इसको हम जनरेशन गैप कह सकते हैं. कुछ लोगों को पुराने जनरेशन के बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है. एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, दैट जनरेशन मैटर्स हियर, because technology evolves very rapidly. तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो जनरेशन गैप है वो 20 to 25 years और 30 years का हो सकता है. लेकिन जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो वो जनरेशन गैप छोटा हो जाता है. 5 years का भी जनरेशन गैप हो जाता है, राइट? So not going into that much, but okay, fine. We have Instagram, we have Twitter. Twitter is very popular because Twitter has been a platform where the celebrity has found. In today's time we have Instagram space, right? In which we get that blue tick. Blue tick are for verification, that these are verified people, or maybe some celebrity or something like that. Fine. This concept was very well used by another platform, that is Twitter. So the verified people had been the celebrities particularly, and right now, though that's a different story, that Twitter or X particularly, what is the symbol of Twitter? सो जितने लोगों को वो ट्विटर बर्ड पता थी, ब्लू बर्ड थी ना, वो चेंज हो गई है. यू माइट बी नोइंग दैट, राइट? सो एज फार एज ट्विटर इज कंसर्न, ट्विटर यूटिलाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू टिक वेल, and many of the celebrities, even celebrities like Amitabh Bachchan, who is into his 60s and approaching 70, or maybe he has approached 70 already. So he has been very much upfront and very much active on such social media platform. But
there are certain types in social media platform, although we are not here to discuss that. Some micro ones or and the macro ones, right? uh, where you can share limited content or the variety of content, and then you can meet people. Now there have been a lacuna of certain social media platform where people who have been searching jobs, people who have been, you know, uh, who have wished to connect with, right mind of people who are into the field of providing jobs, all those people, right? So that was one thing which was missing out. कितना अजीब लगेगा कि आप किसी को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू आर अ गुड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, आपके पास जॉब है, आप हमें दे दीजिए, वो भी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम उसके लिए नहीं है ना। किसके लिए इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम से क्या काम करते हैं आप लोग? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, यस। हाँ, क्या क्या काम करते हैं इंस्टाग्राम पे, बताएंगे प्लीज? रील्स। ओके, मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है आजकल रील्स पे। सॉरी, लाउडर। गेम्स। ओके। डायरेक्ट मैसेजिंग, डीएम्स। तो किसके किसके डीएम्स में हैं आप? चलिए ठीक है, ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, वापस आते हैं। अब प्रॉब्लम आपके साथ और हमारे साथ तब आई जब बेरोजगारी ने हमारे डोर पे नॉक किया कि भाई वी आर बीइंग ग्रेजुएट और हमारे पास कोई जॉब नहीं है। लिंक्डइन पे कितने लोगों की प्रोफाइल है? कब बनाई थी? लास्ट ईयर। कोई ऐसा है जिसके 2 साल 3 साल पहले थी? कम हाथ उठे। कोई ऐसा था जिसने ग्रेजुएशन के पहले बनाई थी? क्या कर रहे थे आप वहां पे? अच्छा, फैमिली बिजनेस। भाई देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ बिजनेस पैसा कमाने की बात आएगी वहां पर वो चीजें आती हैं ना। बट सीरियसली वन थिंग इज देयर नाउ, majority of you are already on LinkedIn, but this session is mainly because how exactly we can utilize LinkedIn to the maximum level. This is what we are trying to do. We have got one specific um, one specific reason here that we wish to, Instagram पे रहने का और फेसबुक पे रहने का या स्नैपचैट पे रहने का एक रीज़न होता है, एंड दैट रीज़न इज दैट वी वांट टू शो द वर्ल्ड और आवर पियर्स दैट वी एग्जिस्ट। यही है ना? वरना क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप कहीं घूमने गए हैं और आप उस फोटोज़ हम लोग जब खिंचवाते थे तो अपने पास मेमोरी सेव करने के लिए रखते थे। हमारे लैपटॉप पे होते थे और कुछ महीने 2 महीने के बाद कुछ याद आ गया तो खोल कर देख लिया। ठीक है, मतलब इतने पुराने भी नहीं हैं हम, फिर भी इतने पुराने कि भाई ज़्यादा मन नहीं करता था कि शेयर करें दूसरों के साथ, अपने तक रखते थे। बट ज़माना चेंज हुआ, और जैसे हम कहते हैं कि जनरेशन गैप जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत जल्दी आती है, तो मे बी 5 years or 10 years वो चीज़ें चेंज होने लगी, एंड यू वांट द वर्ल्ड टू शो दैट यू एग्जिस्ट एंड देयर इज अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ यू दैट शुड रिलेट टू द वर्ल्ड। यही तो हमारा है ना। इंस्टाग्राम पे भी हम डाल रहे हैं और फिर स्नैपचैट पे भी दोस्तों के बीच में डाल रहे हैं दैट व्हाट एवर पोस्ट की। वो एयरपोर्ट वाला तो देख ही लिया होगा सबका कि मैंने वो बोर्डिंग पास ले रखा है, गेट नंबर ये है और एंट्री ये है, मेरी सीट नंबर ये है। बहुत ज़्यादा हुआ तो उसमें हमारी इकॉनमी क्लास के टिकट है उसको छुपा लिया, बस यही होता है। बाकी हम तो शो करते हैं ना। और फिर एयरपोर्ट पे अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट की फ़ोटो खींच क्लिक करके वी आर पोस्टिंग इट समवेयर सो दैट पीपल वुड नो दैट आई एम ट्रैवलिंग। तो फिर वो उस ज़माने में भी फेसबुक पे करता था कि आज की डेट में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप चाहें तो बगैर फेसबुक पे अनाउंस किए भी ट्रैवल कर सकते हैं। दैट वाज अ मीम बेसिकली। सो सोशल मीडिया का रोल इन द पास्ट 10 years has changed. Now you want yourself to be visible to the world.
अब विजिबल होने के लिए इंस्टाग्राम पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सुबह उठते उठते अजीब सा चेहरा बना हुआ है और उसने फोटो क्लिक करके डाल दी। जब तक थोड़े अच्छे से हम दिखे नहीं तब तक तो हम फोटो नहीं डालते ना, राइट? एम आई एबल टू डिलीवर माई मैसेज? जब तक आप अच्छा नहीं दिखेंगे, जब तक आप दिखाना चाहते हैं ना दुनिया को दैट यू एग्जिस्ट, सो वुड यू शो योर सेल्फ दैट यू एग्जिस्ट इन सच अ मैनर विच नो बडी वुड लाइक? ऐसा तो होगा नहीं। आप अच्छा दिखाना चाहते हो, एंड दिस इज द सेम थिंग विद professional social media platform that is LinkedIn. You want to show the world that you are the best. और वहाँ आपकी पिक्चर्स जो होगी वो वही पासपोर्ट साइज पिक्चर ही लगनी चाहिए. But it's not about, LinkedIn is not about clicking pictures and posting it online. It's more about showing what you are capable of. ठीक है? So those who are already having the LinkedIn profile, I have a question to ask you. That what are the important what are the few major aspects, important aspects in LinkedIn that you have already worked upon, you have prepared that domain, and if I visit your profile on social media, on that particular social media that is LinkedIn, I'd be able to see it. What are those major aspects? One by one, please. Education, experience, connections. Okay, one thing. Connection. Can somebody tell me how exactly connection matters or total number of connection matters? The network strength that you have established. Okay, fine. Uh, that was something. What's your good name? That was something which was important earlier. But today, the same thing, that how many number of connections you have, that has a different impact on your profile. We will be discussing that as well. Uh, I'm facing a trouble logging in here. मेरे सिस्टम पे लॉगिन इजीली हो जाता, बट नो इश्यूज. पासवर्ड रीसेट. अच्छा अच्छा अच्छा. और आपको वो भी करना, ये जो डिस्प्ले करना. हाँ, डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट कर लिया तो. हाँ, मैं डुप्लीकेट राइट नाउ बस लॉगिन हो जाता है. ये सेट तो किया था आपने अभी? ये पासवर्ड ले लिया ना. यहाँ से ये कर लो ना.
चेक करना नहीं 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 ये लिंक आया हुआ नहीं रिसीव करे तो आएगा नेटवर्क में इधर अपना स्टेटस टैप कर दीजिए सो टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। और मैं उस ज़माने में भी था जब हमारे पास लैंडलाइन नंबर्स हुआ करते थे और कोई हमारी फ़ोन बुक की डायरेक्टरी नहीं हुआ करती थी हमारे मोबाइल पे, सारे नंबर्स याद रहते थे। और आजकल का जो दौर है वो पासवर्ड का दौर है और पासवर्ड हम बार बार भूल जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग टाइम इन लॉगिंग। Anyways, while it is being logged in, I have few other things to you know clarify with you. One of the thing that which is important is education, as somebody has told, experience, the number of connections. What else? Skills. Okay. What skills do you have? And how exactly that is represented on social media, specifically LinkedIn? डालते हैं TGTN कैपिटल TTN विंडो P Well, this is how somebody's LinkedIn profile looks like. Fine. Um, I won't say I have the best LinkedIn profile that I have, but yes, majority of the content I've prepared. But all of the time, what I receive from LinkedIn is that people, LinkedIn talks to me every time that you need to update your profile. Every month I get this notification. Even if I put something today, I'll get that particular notification. So before I see somebody else's profile, I would like to revisit my profile here. That what exactly I have kept in my profile. Fine. So I think I did not introduce myself properly at the very beginning. The reason was I wanted to introduce me to you through this particular profile, and you'll be knowing each and everything about me, right? So we save that time only to do this thing. So first of all, how exactly my profile looks, if I want to see that, what exactly I have to do? Yes, please. So here is the me section. What do I see? My name is there, and my designation, my bio, or my designation that I have written assistant professor, this is there, right? So what exactly do you want your employer to see or your prospective employer to see? What are you? What's your, my profession is, I'm an academician, I'm an assistant professor. What's your profession? Student of what? MBA. When exactly are you going to graduate? 25. So what exactly you should be writing on your profile? MBA 2023-25. Just write this, and the person who is viewing your profile would get understand that this is a person who is pursuing MBA, and by 2025 would be completing it or should be completing it, right? Or maybe you can write that studentship. Writing a student is not a problem, right? But it's your identity remains what you wish to tell them. Now, this is how any profile would look like. You can see that
There is an I have a name on the left. I have also recorded the audio of my name. If I click it here, you'd be able to listen. This is what I have done. What happens that whenever I have sometimes back I have met some of the foreigners. You know how exactly they pronounce my name? I met Germans. They were pronouncing it as Arif Anwar, and I don't like it. I want them to pronounce my name properly. I met some Americans, US people, and they were also using the similar kind of pronunciation like Arif Anwar. And then you meet Britishers, their pronunciation will be completely different. Arif Anwar or something like that. Their voice goes more into their mouth rather than coming out. This is how we differentiate between different accents, right? But what do I want exactly? They need to pronounce my name. Many of you, for example, I know some of the people here. मनीब का नाम शायद बहुत अच्छे से लोग ले लेंगे. अरूज का नाम शायद बहुत आराम से ले लेंगे. उमर, what do you think? आपका नाम कैसे लेने वाले हैं लोग? Umar, Umar, Omar, what? This is the problem that happens. Somebody who's having a lengthy name, उनके साथ problem होती है. It's better you record it and you show it here. And this is what I have done. I don't want anybody to pronounce my name wrongly. So the pronunciation is Arif Anwar is my pronunciation. So I have kept it. Fine. Now there are a few of the things that I want my people, my connections to see. That on the right side there is my affiliation. That currently I am affiliated to Jamia Hamdard. Your affiliation is also Jamia Hamdard, so it should come like this. Somebody who visits my profile should see these things. Fair enough? आप में से कितने लोगों ने अपना LinkedIn प्रोफाइल ओपन कर रखा है अभी राइट नाउ? गुड. बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं ओपन किया है, यू आर सॉरी टू से, मैं वैसे इतना हार्श नहीं होना चाहता, बट आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा. प्लीज ओपन इट. अगर कर सकते हैं तो, नेट चल रहा है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं चल रहा है कोशिश कीजिए, सो दैट जो भी चीजें हैं आप उसको देख सकें. बिकॉज what you are seeing in my profile, you might forget. If you see it in your profile, you'd be able to remember it and recall it further so that you can update it later. And it was already announced that you should bring your laptops so that whatever changes you want to bring in, you can do it very easily. Now moving further, if my connection wishes to see me, suppose this is the contact info that I have. I live in Delhi, India. I have 500 plus connections. Contact info, if I click, these are some of the things that is there, right? So my email ID is there or something, and whether I wish to show it to other people or not, this is what I can control from my settings. Now moving further, in today's time, there is one your profile picture could be changed. We'll be talking about this now. अच्छा मौका है. Rate my profile picture. 7. Thank you. सर 9 किसने बोला था? मैं उनसे बात करना चाहूँगा. 9 कौन थे? शादाब. ओके. सो 9 देने की वजह बता दीजिए. It covers my face. Okay, fine. आप कितने नंबर दे रहे हो मुझे? मैं आपसे ही बात. आपका नाम बता दीजिए. और साहब ठीक है. और 7 किन्होंने दिया था? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आजकल मैं अभी तक मैं तुम्हें नंबर दे रहा था, अब तुम मुझे नंबर दे रहे हो. चलो कोई बात नहीं. हाँ, I don't have a tie. -1 वहां से कर लिया. ओके. लाइक इफेक्ट है. ओके, मैंने ये ट्रू. एक्चुअली पिक्चर फोटोज क्लिक करवाने की आदत नहीं है, एंड ये ऐसे ही किसी कमरे में, डल कमरे में ही लिया था. दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक दिस, एंड आई वेरी मच अग्री that this 7, I'm very honestly and very
On a receptive manner, I'm taking it very well. That yes, मेरे profile picture में अभी भी कुछ कमी है. Out of it, one of them is I'm not wearing any tie. Second one is the glow on my face or the light is not appropriate. So इसकी वजह से मेरे दो तीन नंबर कट जाने चाहिए. Fine. That means this whole profile. आप में से कितने लोगों ने पूरी पिक्चर लगा रखी है ऊपर से नीचे तक? प्लीज मत कीजिएगा. How many of you have applied for any visa in any country? Which country? Saudi. Anybody who has applied for Europe or US Schengen visa or US B1 B2 visa? I have applied for both. Alhamdulillah, I got the visa as well. What they ask, specifically US का अगर किसी ने क्लियर कर दिया, that means वो all over world उसका वीजा रिजेक्ट नहीं होने वाला है, because not because कि US का वीजा मिल गया, because US का जो क्राइटेरिया है, that is one standard criteria, वो अगर आप फॉलो कर लो तो all over world that criteria is validated. So what they ask you to put more than 75%, approximately 85% of the face cover. मतलब आपका फेस प्रॉपर्ली दिखे. दिस इज हाउ यू शुड बी विजिबल देयर, हाउ यू लुक्स लाइक. You can go without face as well on LinkedIn profile, but it's better that somebody would be recalling you through your face. It's always better. So keep your good photograph there. Now there is a badging that is done on photographs. What is the badging called in today's time? Those who are not having any job, open to work. This particular section, open to work. So if I just click on that and if I change my profile, so what will happen? This particular picture of mine and my shoulder area, this particular area would be written as hashtag open to work. That means I might be getting phone calls that you can come and join our organization, we have seen your profile. Right? So I think this is one thing which you all must do, but not today, after some time. So those who wish to pursue internships in some time, they should be writing it in their profile, and in their bio, in the second line, you must add another line that looking for internships or looking for prospective internships. Because अभी से start करेंगे तो एक अच्छी internship आपको अभी से एक एकेडमिक सेशन कंप्लीट होने के बाद, और मे बी नेक्स्ट ईयर बाय मई और जून आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाएगी. बट यू नीड टू अप्लाई इट फ्रॉम टुडे itself, right? So there are some of the other things. Let me see what more can say. Not now. Now there are certain analytics that have been shown that it is private to me, it won't be shown to others, that I have 186 profile views recently, or no, it's complete 1130 post impressions. थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी आप लोगों से और आपसे मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस का क्या यूज है, that how strong my network is. यही तो बात हुई थी ना. आज की डेट में that has reversed, वो सेकंड हो गया है. फर्स्ट इज how much impressions have you created. Impressions क्या होता है, किसी को पता है? Those who have, yes, Mani? Viewing your post, reacting to your post in the form of shares, in the form of comments. इस पे तो शेयर नहीं होता ना, शेयर भी होता है, repost भी होता है. Repost is another thing, and then we have a lot of things are there. So that in a aggregate manner that creates an impression. So this is the impression that I have created, and that is 1130 post impressions and 148 search appearances. यानी जिन लोगों ने कुछ भी ढूंढा है उसमें 148 appearances यहाँ मिल गए. Anyways, I will move further. This is my bio, the true bio that I talk about. That I'm an experienced academic professional with a demonstrated history of working in the higher education industry. Now, what exactly do you wish to put in here? What exactly do you have? I'm an academician, I can write it. You have been a good student. How many of you have work experience? Post graduation के बाद का work experience. Okay. How many years, both of you?
3 years. You? 1 year. 2 years after graduation. Fine. So that is something which you have to include in your bio, that you are an experienced professional in this particular field, and right now you're pursuing MBA in the field of this. Uh, there are two words that are often used. One of them is abstract. That has a different meaning though, but abstract is one word. The other one is uh, what you intend to do, and that is something which we often write in our resumes, or even in our biographies. Bio, the full form of bio is biographies. That what exactly we wish to do. हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, and in your resume you write it under the section of career objective. So in bio your career objective should be reflected. मेरा career objective भी है which I have not mentioned here, but जिस दिन मुझे open to work करना होगा, I might be finding senior position like associate professor. We are assistant professors. The next position for us would be associate professor. So maybe if I'd be looking for associate professorship in some other institution, at that point of time I'll have to change it and I have to put my career objective here. जब तक I want people to see that who am I, तब तक ये ठीक है. The moment मेरे फोटो के नीचे भी open to work आ जाएगा, उस दिन मुझे अपना about me change करना होगा, अपनी biography change करनी होगी. Am I clear? So what exactly are you going to include? What are the key points here for about? Number one, what kind of experienced professional you are. One, if you have. If you don't, then at least the second point which is important is that what you wish to do further, in which field. So there are few things you must know. Number one, which field you would be selecting, whether it would be marketing, sales, operations, finance, accounting, HR, international business. So we have got all the specialization, and you, if you think that after 1 year you would be selecting that, you are already making a mistake. It's better you decide right away. आप अपने इंटरेस्ट को अलाइन कीजिए और आपका डिसीजन फौरन आपके सामने आ जाएगा. Yes, you wish to pursue operations and marketing as two of your specializations, and then you write here in your profile that you wish to work in the field of operations. So number one is field area. Second, what designation is something which you cannot be sure enough. Designation तो वो मिलती है ना, management trainee, assistant manager, deputy manager. You are not sure about it. But it's better you talk about the role that you wish to pursue. What is the difference between role and designation? Role and designation. So designation is one title that is given to you. कि आप manager हो, assistant manager हो, deputy manager हो. Role is वो manager या deputy manager बनने के बाद आप कर क्या रहे हो? Is it the customer relationship that you are establishing? So if you are establishing customer relationship, you will write customer relationship manager or customer relationship. If you are into HR and you are into recruitment and selection, you will write recruitment and selection in this particular organization. That is your role. If it is about training and development, you will write training and development. If it is about sales, sales manager, area sales manager, or something like that, that would be the role. उसके बाद आती है list of activities that you can do. Roles उन activities को बोलते हैं your responsibilities. So obviously responsibility should not be mentioned here, but at least what role you are preferring or you would be preferring, that is very, very important. So try to mention that in your. So some of the featured things is like I have posted one conference was held last year, 11 months ago. So I've posted that, and that had very much of impressions associated with it. Maybe post, repost, comments, or something like that. That's why it has been, it is showing here. So, and different activities. So I have total of 1137 followers. The post, if I see, the very recently, yesterday only I have delivered one session at Asia Pacific Institute of Management. So I posted this particular thing so that people should know that yes, I delivered one lecture there, right? So that is one post. There is all the associated comments are there, and 1151 impressions have been created.
So how well the impressions are being created, you can see the analytics from here. I'm right now telling you everything what you can do from your own profile, right? I haven't shown anything that you can do on others' profile. It's totally about building your own profile. Now the total impression is 1153 including the last post. The total reactions 122, comments 20. This is what exactly is associated with that particular post. And total demographics have been mentioned here. So this is how exactly your any post would work. And you can see that how impactful impressions is basically the more rigid word is impact and sober word is impression. So whether I'm having an impression on you or whether I'm having an impact on you. So impact is being a bit harsh, a bit hard, rigid. So though I'm saying impact, but it's basically impression that you are making. But what exactly is important for you? Leaving the impression or leaving the impact? Impact. So impressions, जब impressions बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, then you will be making certain impacts. तो चलिए मुझे तो मौके मिल गए, मैंने कुछ पोस्ट क्रिएट की एंड आई हैव शेयर्ड इट with my connections. Now I have a question to every one of you. What exactly are you going to do? What exactly are you going to post here? कहीं ट्रैवल कर रहे हो वो तो पोस्ट नहीं कर सकते हैं, बोर्डिंग पास तो नहीं डालोगे, मनाली का ट्रिप, शिमला का ट्रिप, डलहौजी, मैक्लोडगंज, उसका भी नहीं डालोगे, बीचेस और पहाड़ों का भी नहीं डालोगे, क्या डालने वाले हो फिर? विच यू हैव नहीं, वही तो प्रॉब्लम है. आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज वेरी लेस. यू विल नीड टू क्रिएट दोज थिंग्स. कभी ऐसा हुआ है कि 5 साल पुरानी फोटो लेकर मतलब लगातार आप डालते जा रहे हो, ये फोटो थी, ये फोटो, ठीक है करते हैं, मेमोरीज वाला डालकर करते हैं, लेकिन यू ट्राई टू पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग विच इज न्यू, विच इज फ्रेश. तो आपको कुछ फ्रेश चीजें क्रिएट करनी है. क्या क्या फ्रेश चीजें क्रिएट कर सकते हो? Go for a 1 week internship, go for a 1 week certification, go for 1 month certification. I think MBA में आ चुके हैं आप लोग. अब आप लोगों को एक काम करना चाहिए, हर महीने का एक महीने का एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन यू कैन पिक अप, मे बी इन डिजिटल मार्केटिंग, मे बी इन फॉर एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, एक्सेल, जितना आपने स्किल सेट की भी बात की ना, Excel का certification. Then it's not just about participating in here. You know, Jamia Hamdard will give you platform. Whether you want to use that particular platform as a launch pad and you capitalize on it very much, that's up to you. How exactly you can do that? I don't think this is the only university which is providing MBA degree. There are a lot many universities, and there are some good universities which are as equivalent to Jamia Hamdard, which are not so good as compared to Jamia Hamdard, and there are certain universities like IIMs which are much better than Jamia Hamdard. We can very much agree to that, right? The point is whether you would wish to go for certain participation in any program that is being offered at any different institute. Do you wish to get that exposure? तभी तो आपके पास एक certificate होगा that you visited IIM Lucknow's NCR campus that's in Noida, or maybe you visited IIM Ahmedabad, or maybe you visited IIM Bangalore and you went for some 1 week program or 1 day program or 2 days program. In this post, how many entities I have tagged? 2. One is the institute, the other one is the concerned person through which I was connected. So I have thanked both of them. What you can do is you can tag the host institution, and also you can tag somebody from this institution that thank you for your support, not because they actually supported you, but at least to let them know that we have achieved something. So next time you are posting something, to let me know, Arif sir, thank you for your support that you have provided us during the classrooms. मैंने किया भी नहीं होगा, बट आप मुझे बता रहे हो कि आरिफ सर देख लो,
मैं कुछ लेकर आया हूँ अपने साथ, मैं कुछ लेकर आई हूँ अपने साथ, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। भाई मुझे भी तो पता चल, आप लिंक्डइन पे पोस्ट इसलिए कर रहे हो ना, मुझे पता चले। अब आप मेरे कनेक्शन में इतने प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं हो कि मुझे फॉरन आप पोस्ट करोगे और मुझे रिफ्लेक्ट होगा। मेरे 1000 से ऊपर कनेक्शन है, उसमें जिनसे ज़्यादा मैं कनेक्ट करता हूँ उनका पहले दिखेगा ना मुझे। दिस इज हाउ दिस एल्गोरिदम ऑफ सोशल मीडिया वर्क्स। आप मुझे अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो क्या करोगे, मुझे टैग करोगे। So try and tag each and every stakeholder in the organization so that your visibility increases. Right? So this is how exactly social media platforms are used based on the algorithms. Now going back, and now I have mentioned about my experience here. So somebody who's visiting my profile for the first time, or they are trying to know that what exactly I've done or where exactly I have worked. So my current organization is Jamia Hamdard. My previous organization was this Asian Business School, then NIT Srinagar. I was in Jamia, I was in Jamia Hamdard as well as visiting faculty. And if I click on all my profile, you will find that I have worked in 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my sixth organization. Although there is one more organization that I haven't mentioned, but the total of 7 organizations that I have mentioned here that I have worked so far in the past 7 years. Right? Average अच्छा चल रहा है. Okay. Now, next thing, my education. So, 3 important components of my education that I have is my undergraduation, my post-graduation, and my doctorate. I did not mention anything about my intermediate and my matriculation because right now I don't think that is important here. Nobody is going to see what exactly I did in my 10th and 12th. What is more important that what was my undergraduation subjects. So that is BTech from IB University. I'm an MBA from Jamia Islamia and a doctorate from AMU. So this is what exactly somebody would see and they'd be able to connect. Okay, fine, this is the person that I was looking for, and I should not because they would be giving me some job opportunities or not because they would be taking certain jobs from me, but because building collaborations. They are working in the same field there. Maybe somebody was already working in AMU or Delhi University or JNU or somewhere, and they can see my profile and they can think of collaborating with me on certain aspects. So I'm a BTech graduate, I'm an MBA, and I'm a PhD. So that is enough for them to understand my mindset and my learning overall that I have taken in the past, and they can connect with me and collaborate. This term is very important. Connections तो आप लोगों ने बोल दिए ना, collaborations अभी मैंने बोला है. What exactly you can do in collaborations? Connections से collaborations होते हैं. Connections तो आपने बना लिए, collaborations कैसे करेंगे? हम लोग collaborate करते हैं, like this was the collaboration that Dr. Amri Sharma, she invited me in her institute for delivering a lecture. That was a collaboration, right? And maybe I can invite her someday here at Jamia Hamdard, and she's a very good academician. She can come here and she can share her experience. This is one way of collaborating. How exactly you are going to collaborate? No, like we did something, right? I went there, I delivered a session, I delivered a lecture on certain topic, and there was an output. Collaborations के output जरूरी है, mind it. So एक output निकला, that lecture was delivered and people, the beneficiaries, the students were benefited. What collaborations you can make? You can identify somebody that who has similar skill set, and that particular person might be looking for another skill set, and you too. So you have some basic Excel. I also know some basic Excel. Let's go together for a combined advanced Excel program. Learning collaborations. If somebody is working in for some internships, he or she can also take you there, or he or she can refer you certain, or your profile could be referred to some organization. This is how collaboration would work for you, and then you can take up common projects, right? So this is how exactly it is going to impact you. Now I have
20 स्किल्स, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इतना मेंशन किया। स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, लेट मी सी। सो स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, यूनिवर्सिटी टीचिंग, रिसर्च स्किल्स, डेटा एनालिटिक्स, PowerPoint, English, electrical engineering, teamwork, C, C++, Microsoft Office, Word, Excel, HTML, Windows, public speaking, SPSS and MOS. So there are and 20 number of skill set. आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो? अगर आपके पास अपने MBA खत्म होते होने तक आपके पास टोटल 10 स्किल सेट मेंशन नहीं है एंड मीनिंगफुल टेक्निकल स्किल सेट, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर। हर महीने का अगर ऐड ऑन करें और मान लेते हैं कि 8 महीने की पढ़ाई हो रही है, 4 months इन वन सेमेस्टर, 4 इन अनदर, और उसके बाद आप एग्जाम्स में बिजी हैं, सर्टेन इंटर्नशिप्स, सो इट्स बेटर व्हाट यू कैन डू इज 8 इन 1 year, 8 इन अनदर, 16, उसको भी थोड़ा कम कर लीजिए, 10, आई एम गिविंग यू 10, 10 का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। हैव 10 सर्टिफिकेशंस इन द अपकमिंग year, 2 years, and put it on your LinkedIn profile. ठीक है। नाउ देर आर सम ऑफ द endorsed, ये ना मेरी इंग्लिश पे 3 लोगों ने endorsements दी है, that English speaking or language is one skill set that I have and people have endorsed it. Now, so one last thing is you need to understand that, अच्छा, आप में से कितने लोगों की प्रोफाइल पे किसी और ने टेस्टिमोनियल लिखा है? नहीं लिखा है किसी को? व्हाट इज अ टेस्टिमोनियल? नहीं पता? यस बताइए। गवाही, सॉरी। यस, सो somebody testifies that you are of some worth. आप में से जो लोग बाहर से आए हैं, ask your, ask on LinkedIn, connect with your previous faculty members and teachers, ask them to write a recommendation for you, that testimonial. And those who are here, अब क्या कहूँ आपसे, अब तक रिकमेंडेशन के लिए आ जाना चाहिए था हमारे पास LinkedIn पे कि सब कुछ इंडोर्समेंट कर दो हमारी, कुछ लिख दो हमारे लिए। आपके पास कम से कम 5 इंडोर्समेंट्स, 5 रिकमेंडेशंस होनी चाहिए आपके टीचर्स से या आपके एम्प्लॉयर से। SIP से जाके एक अपने बॉस का रिकमेंडेशन ले लीजिएगा, दैट हाउ वेल यू आर वर्किंग। ऐसा ना हो कि खराब लिख दें, अच्छा लिखवाइएगा, और दैट मैटर्स। इंडिया में इसकी प्रैक्टिस कम है, बट बिलीव मी, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। एक एक कनेक्शन पे आपको 20-20, 30-30 रिकमेंडेशंस लिख के मिलेंगे। आपके पास कितने हैं? So work on that. Now, why we have talked about so much, then there are a number of things that we can talk about, but these are the very basic things that you need to put in your profile. फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, you keep on adding it. आप उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक काम कर पाएंगे, and that is, वापस यहाँ आइए, जब हम लोग रील्स वाले कौन थे सब, आप ही बता रहे थे रील्स का, किसी ने तो कहा कुछ, तो जी हाँ, हम लोग रील्स में बिजी हैं। उस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, दैट इज द वेरी बेसिक दैट वी कैन डू। हमारे पास एंडोर्समेंट्स होने चाहिए, स्किल सेट होने चाहिए, वो बेसिक स्टार्ट कीजिए। जिस दिन आप कहेंगे हमारी टीम दोबारा से खड़ी हो जाएगी, मैं कहीं किसी क्लासरूम में खड़ा हो जाऊंगा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और बेहतर करवाने के लिए, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं विच यू शुड इंक्लूड इन योर प्रोफाइल। इतना तो हो जाएगा ना? ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसी शायद जितनी भी चीजें ऐड ऑन करने के लिए कहा है, उसमें से 30% चीजें ऑलरेडी आपके पास थी, 20 to 40% के बीच में ऑलरेडी आपके पास थी, कुछ 60% के आसपास मैंने और 50-60% के आसपास मैंने और आपको बताया है टू ऐड ऑन। एंड देन उसके बाद अपना CV ना यहाँ से आप डाउनलोड करके देखिए, बिल्ड योर CV। अगर वहां से अच्छी CV बन जाती है, फेयर एनफ, मतलब आपका अच्छा चल रहा है। नहीं बन पा रही, दैट मीन्स यू नीड टू ऐड ऑन सम मोर थिंग्स। सो विल यू वर्क अपॉन दैट? तो सर, जमशेद सर, एक टास्क दे दें, इनका सबका एक PDF मंगवा लें हम। So what you need to do is update your profile, ठीक है? And after updating the profile, you build your CV. There are 2 files that you have to create. One is save as PDF, save to PDF. The other one is build a resume, ठीक है? And what exactly you need to do is you need to mail it to me.
जो आपकी फाइल नेम होगी दैट विल बी योर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, जेएच एप्लीकेशन नंबर, just let it be. नेम जेएच एप्लीकेशन नंबर इसके साथ आप सेव कर दीजिए. सो समबडी वाज औसाफ कहाँ है? औसाफ, औसाफ आपकी, आपका नेम है AUSAF, पूरा नाम क्या लिखते हैं? अच्छा, मोहम्मद औसाफ लिखते हैं. तो आपका फाइल नेम होगा MOHD औसाफ. एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका? क्विकली प्लीज. लास्ट के 5 डिजिट्स बता दीजिए. सो लेट मी से 000 या 00572. तो ये आपकी फाइल होगी और डॉट PDF करके आपकी फाइल सेव होगी. ये वाली फाइल आपको मेल करनी है कहाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ. arifanwar@jamiahamdard.ac.in. ठीक है. So there would be two files. One is the PDF, and the second one will be your CV built at LinkedIn. Although the session started around 10:20, 10:25, we wanted to have 1 hour session, but फिर भी ज़्यादा चीज़ें complete हो चुकी हैं which we wanted. ठीक है. So I'll end my session here, and I'll hand over the dice to the moderators here. Thank you. Thank you, sir. Your words have enlightened us and provided us with a valuable perspective. Thank you for your inspiring presentation. Now, as we move forward with our program, I am delighted to true authority in MX Excel and its industrial application. It is an honor to extend an invitation to the stage Dr. Syed Zakir Hussain, sir, Assistant Professor, Department of Management of Jamia Hamdard, whose profound knowledge and experience will undoubtedly illuminate our discussion. A warm round of applause for Dr. Zakir Hussain, sir. Hello guys, good morning. I think some of you are familiar with my name and my face as well. Nice to start a session with you all. I'm not going to teach you anything today because this is not the classroom. Actually, we are going to interact with you. And the thing is, you must having the knowledge of computers application in business, because you are going to getting the master degree in the business administration. You are not dealing the business without knowing the IT, information technology. You must be having the basic knowledge of at least the information system and information technology. Here I am just talking about two words simultaneously: information system and information technology. Are these two words are same or different? Information system or information technology? Is there any difference between these two terminology, or is the same? Some of my students might know. I know that you should raise your hand and tell them, anyone. Is there any difference between information system or information technology? Are they same, or is there any difference between these two terminology? Information system and information technology. Just tell me. And information technology is the technology by which we can interpret information. Yeah, correct. Information system and information technology
you know, there are four components which are made up with the information technology. They are the hardware part, software part, database, and network and technology. When you talk about information technology, means you are talking about four components. You are talking about hardware, you are talking about software, you are talking about database, you are talking about network and technology. When you will add up two more components, that is the people and process, then it will become information system. Information system is an umbrella term. Information system is an umbrella term which covers the four components of information technology, as well as it's having two more components, people and process. And these components are very, very important components. Without these two components, you even can't take the benefit of technology completely. These people and process, it is you, the manager of futures. You are going to lead the industry sometime today or after a few years. It is you only who will make the process. So without having the competent guys in the organization, it is very difficult to run the organization. You must have seen in remote colleges or in remote hospital, they purchased lot of hardware part and software, server, computers, and they kept lying idle. Why it is like that? Because they don't have the capabilities of using that gadgets. In remote hospital somewhere in the gaon, in the village, they have the budget, so they purchase, they procure all these devices like hardware, software and all, but they don't have the people, the competent person who will use that gadgets. They don't have the right process how to utilize all these benefits from these gadgets. So that is the two component, people and process. That's why in today's world where you guys are going, it will be completely techno savvy, tech savvy manager. You are not becoming the traditional manager, 9 to 5, dealing with the paper files and all. No, nothing like that. Everything is digital. We are talking about the paperless world. We are talking about the paperless economy. We are talking about the digital economy. What is this? Even today's, if you go somewhere to have a cup of tea, that tea vendor is having the Paytm. They know about the UPI. All the time you pay your 20 bucks or 25 bucks on the Paytm through the Paytm using the UPI. Just think that tea vendor having the small stall on the roadside, they adopted the changes. This is the changes basically. They adopted the changes and they started using this UPI, Paytm, Google Pay. They might be having no degree at all, but this is the need of the hour. This is exactly the need of the hour. You can't escape, my friend. Believe me, you can't escape. Regardless of any discipline, you are going to become a marketing manager, you are going to become a HR manager, you are going to become a finance manager, whatever. Regardless of any stream, you must be having the basic knowledge of computers application. So information system and information technology are basically two terms. Information system is an umbrella term comprising of 6 components: hardware, software, database, telecommunication and network, plus 2 components, people and process. When you will talk about network and tele, so many times this information is, because the, how can you define the data with the information? Is the same thing or different thing? Yes.
Same thing or different thing? What is the difference between data and information? Basic things. Okay, no problem. And one thing I would like to tell you here, I am going to teach your one paper MIS. So don't worry, because my all the classes I kept focusing to have an interactive session. It's not like that one type communication. No. You should also come in the class with full preparation. It's not like that just passing the time. You can't pass the time in my class. My class is all the time is very interactive. Your senior, some of you is here. They might tell you, okay, you must have the, you just refresh your knowledge. Computers is not like that. You have software, memories, CPU, but basic understanding is must. Information is something useful. The interpreted data will give some sense, some meaning to you. Data is raw facts and figures. When you will process the data, it will become information. Very simple. If I write a number over here, 9810028216, if I'll ask what is this, you may say this is the number, might be a mobile number or bank account number or anything, but this is the number. It's not giving you complete information. It will not give you complete detail. So that is the data. If I write a number 9810028216, this is the data. You can say, sir, this is a data because this is a number I know, but what type of number is this? We don't know. If I process it, means if I make a complete sentence of this, this is the cell number of Dr. Zakir sir. Is giving a complete detail to you. One important thing is this: information must be useful to the user. Because only MBA guys know the Dr. Zakir Hussain. The Tibia or the Unani student, they might know who is Zakir Hussain. So this information might not be useful for them. It is useful for you only. So this is also an important point we should consider. Information must give some sense to the user. This is the information for you, but this not be the information for Unani students. They might tell you, I don't know who is Dr. Zakir sir. So this information may not helpful for them, but this information is helpful for you because I am going to take a class of you, a paper, MIS. You might have my number, but they don't need any number of Zakir Hussain. This is the important thing. All the time we say we have data, we have information, but this is not the same thing. Data means something raw facts and figures. We capture the data, we store it somewhere, we process it, we disseminate it. We never capture the information. No, we capture the data, we store it somewhere, we process it and we disseminate it. This is exactly the task being done by information system. This is the basic thing, my friend. All the time we capture the data, we store it somewhere, we process it, we disseminate it. What we are doing? We are performing a cycle. And this is being done by information system. Any system which are capturing the data, storing it somewhere, processing the data or disseminating it. It means it is performing the function of information system. Information system is consisting of how many components? Information system is how many components? 6 components. Very good. Hardware, software, database, network and communication, plus people and process. And information technology is having how many components? 4. What is that?
Exactly. Exactly. So information system, every day we are using this information system, but we don't know what we are doing. Information system is as simple as the piece of paper and pencil. What you are using in the class. What I am saying, information system is as simple as the piece of paper and pencil what you are using in the class on the daily basis. This is the information system. And as complex as the information system is which is being used by NASA, the research organization worldwide, big, they are also using the information system. You in the class also using the information system. A piece of paper and pencil, what you are doing? You are capturing the data, you are aware, you are processing it, understanding it, and then you are disseminating it whenever it is being asked, like in examination, in interview. You are disseminating it whenever it is asked. Yes, this is the information system. The information system is as simple as the piece of paper and pencil and as complex as the information system is which is being used by NASA. Agony. Yeah, this is the same thing what we are doing. So information is the key of success. Today, organization is spending huge amount in procuring technology. Why they are doing so? Are they fool? No. Information is not very much useful unless and until it is being retrieved by you as and when required. आप अपने घर पे टेलीफोन बिल, बिजली बिल रखते हैं somewhere. This is a very good information or very important information. You are keeping it for the future reference. आप घर पे फाइल के अंदर में बिजली बिल, टेलीफोन बिल को रखते हैं अच्छे से. टैक्स बिल जो भी होती है एक इंफॉर्मेशन है जिसको आप you want to keep it for future reference. कभी भी कोई मांगेगा then you can show them. अगर आप एक साल के बाद कोई बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से somebody ask and then ask you the show me the bill, but you don't know where you have that. If you don't know, no, you might spend whole day. You cannot find the bill where you keep it somewhere after 1 year before. But if you have 1, 2, 3 or 4, 5 years, will it be difficult for you to retrieve? No. That is exactly what we are going to do in our practical life, in corporate world. Here also you are going to handle the courier boy. They come to your doorstep to pick up the packets. They are carrying information system. The days are gone when they ask you to sign on the paper, when they come to pick up some packets. No, they show you some electronic gadgets, and on the gadgets you have to sign. What is this? They are carrying complete information system. At back end they have a good connection. They are connected with the corporate server at back end. So the days, every moment in our lives, we are dealing with information system and technology, my friend. But we are not trying to understand the things, how the things have got changed over a period of time. Things have completely changed over a period of time. The way of working, the way of dealing, the way of studying, the way of education, the way of shopping. Today, hardly people go to the market for shopping and all. Hardly people go to the bank for doing the bank purpose. Hardly go to railway station for booking the tickets. You guys also ordering on the Swiggy, Zomato. What is this? The things are completely transformed just because of technology. I think now you can differentiate between information system and information technology. Technology might be anything. Information technology only related with the information system and all. Completely, the business model have completely changed.
You guys are going to lead a very high-tech industry somewhere after passing your master degree. The business model completely changed. You must have the innovative ideas, and that ideas is being supported by technology. And that's why Ritesh Agarwal is one of the leading hotel entrepreneurs today. How the Ritesh Agarwal is a simple graduate, how Ritesh Agarwal got, the success in the world, in the hotel chain industry. He was a learned person like you guys, because he was very curious. You must observe the things getting changed around you all the time and try to solve the problem which are not being solved. And this transformation change is because of two things: innovative ideas plus what? Technology. टेक्नोलॉजी. रितेश अग्रवाल के पास आज आइडिया आया है तो उसने इतना सक्सेस, तो उसको टेक्नोलॉजी मिल गई. आज से 20-25 साल पहले भी आइडिया आता होगा लोगों के पास, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी नहीं थी. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. आज बस टुडे यू थिंक, यू हैव द रेडी सॉल्यूशन विथ यू. You just think whatever you think, and you must be having the ready solution with you. So this is the world where you are going to lead sometime, my friend. So be focused to learn the technology. Be focused to learn the. Did you notice what basically running in that period? आपने बटन प्रेस किया और आपको लॉगिन स्क्रीन कुछ सेकंड के बाद मिलती है. प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैक एंड में एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलता है, बायोस फर्मवेयर. वो चेक करता है सारे पार्ट्स को, आपके कंप्यूटर से जो भी कंपोनेंट अटैच है उसको चेक करता है. दैट्स फॉर द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. जैसे आपने पावर ऑन किया, स्टार्टेड चेकिंग. उसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? बायोस. नाम सुना बायोस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. या रोम में माय फ्रेंड, रैम इज वोलेटाइल. जैसे कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा, रैम से सब कुछ वोलेटाइल हो जाएगा. रोम में होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, और बायोस जो है एक फर्मवेयर है. बायोस एक फर्मवेयर है जो कि रोम में होता है. उसमें एक पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. वो क्या करता है? सारे कंपोनेंट को चेक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में. ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में. तब आप कहते हैं, और उस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, बूटिंग. हम कहते हैं बूटिंग कर रहे हैं. तो कभी सोचिए क्या है बूटिंग? क्या बूटिंग कर रहे हैं? ये बूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. इट विल लोड इन द रैम. जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं आएगा, आपको कंट्रोल स्क्रीन नहीं मिलेगी. आपको लॉगिन स्क्रीन मिल गई, अब आप वहां पे कोई भी एप्लीकेशन को रन कीजिएगा तो वो लॉगिन स्क्रीन मिलती है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रैम में अवेलेबल रहेगा तब. और आजकल तो बायोस का एक नया मॉडल आ गया, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस, UEFI. बायोस, क्योंकि देखो की द डेवलपमेंट एंड थिंग्स आर गेटिंग चेंज ऑल द टाइम. चीजें डेवलप हो रही हैं. आज से पहले जो कंप्यूटर था 50 साल पहले, क्या आज वैसी है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, क्या चीज थी उसमें? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या चीज होती थी? क्या कंपोनेंट होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में? क्या कंपोनेंट था जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है? उसमें जो सर्किटरी डायग्राम, जो डिवाइस होता था, वो क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब,
लाइक ए बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, बड़ा बड़ा बल्ब होता था वो, उसको हम फिट करके सर्किटरी डायग्राम बनाते थे। that computer was belong to first generation computers। उसके बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ, एक नई चीज इजाद हुई। क्या था वो? जिसने एक टर्बुलेंस ला दिया आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में टर्बुलेंस आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू इन्वेंशन। एक है ट्रांजिस्टर और दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईटी। आप कुछ जानते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता है सब चीजें, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, रिट्रीव नहीं हो रहा। जो भी अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक बिल का जो एग्जांपल दिया, इंफॉर्मेशन है आपके पास। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट समवेयर। ऐसा नहीं कि मैं को रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू मस्ट हैव रेड इट समवेयर बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। रिट्रीव प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको रिट्रीव करा रहा हूं मैं। एंड ऑल द टाइम ड्यूरिंग द 2 years you have to store the information, retrieve it, store the information, retrieve it all the time. Then the process will keep running fine. अगर स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, नहीं, रिट्रीव कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं, नहीं, both should run simultaneously। ठीक है, तो ये जो रैम एंड रोम है, आजकल 2 चीजें हैं जिससे हमारी कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग आजकल हम 5th जनरेशन में है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी, फोर्थ जनरेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, and all this new artificial intelligence and voice recognition and face recognition, cloud computing, blockchain, data mining, virtual reality, augmented reality, n number of things, n number of things। But believe me, अगर आपने 2 साल यहां लगा दिया, you will get a lot of good faculties over here। आप एक अच्छा प्रोडक्ट बन के मार्केट में निकलिएगा। बिकॉज मैंने कल भी बताया था, यू हैव टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट आफ्टर 2 years। कौन खरीदेगा आपको अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होगी? तो सैलरी देगा आपको 20 लाख 25 लाख, दे विल बाय योर टैलेंट। तो पढ़िए, थिंग्स आर, जबरदस्त चीजें यहां पे हैं, बहुत से सारी चीजें हैं। तो मैं आपको 1 घंटा में बहुत सी चीजें नहीं बता पाऊंगा ना, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर, आईटी नॉलेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग चेंज। और जो हम 5th जनरेशन में आज पहुंच गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, कहां चला गया? इवन टूडे द टेक्नोलॉजीज आर मेन फोकसिंग ऑन द मिनिएचर टेक्नोलॉजी। लैपटॉप को पॉकेट में रख के चल दीजिए आप, पाम टॉप आ गया। पहले का लैपटॉप इस कमरे के बराबर हुआ करता था, एक जो कंप्यूटर्स थे, सर्वर थे, इस कमरे के बराबर। बिलीव मी, आप जाके देखिए जो यूनिएक और एनिएक जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है, उसकी फोटोग्राफ देखिए जाके आप गूगल पे, यूनिएक और एनिएक की फोटोग्राफ देखिए तो आप लगेगा बड़ा हॉल। यू नीड टू प्लेस दैट कंप्यूटर्स इन दैट। बड़े बड़े उसमें वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, हाई पावर हीट जनरेटिंग, दैट सारा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनिएचर टेक्नोलॉजी। लैपटॉप हमारे पास है, पाम टॉप हमारे पास है, रैक माउंटेड सर्वर है हमारे पास। जो सर्वर एक बड़े बड़े रूम में हुआ करते थे, आज सर्वर को आप यू जस्ट प्लेस ऑन द रैक, रैक माउंटेड सर्वर। स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी, ये 3 चीजें हैं जिसमें बहुत काम हुआ। याद कीजिए वो दिन जब एक पेन ड्राइव 1 GB की लेने के लिए आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़ता था। आज टेराबाइट की पेन ड्राइव लेके आप घूम रहे हैं, एंड इट जस्ट कॉस्ट वेरी लेस। मेमोरीज की बात कीजिए, अगर मेमोरीज हम जब 90s की बात करेंगे तो हमारे पास था SD रैम, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। आज क्या है बता सकता है कोई? कौन सी मेमोरी यूज कर रहे हैं?
आज नहीं, इंटरनल तो है बेटा, नाम बताइए। आज हम डीडीआर यूज कर रहे हैं, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, DDR6, पुराना नहीं हुआ, उसका अपग्रेडेशन आ रहा है। हाँ, गुड, आज वो यूज कर रहे हैं हम। प्रोसेसिंग स्पीड चेंज हो गई है कंप्लीटली। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें मार्केट। अच्छा, प्रोसेसर में कौन है आजकल टॉप इन द मार्केट? इंटेल। इंटेल का कौन है कॉम्पिटिटर? कौन है कंपनी राइजन की? AMD। बिल्कुल, AMD राइजन 7000 सीरीज जो है वो उसका कॉम्पिटिटर है इंटेल का। इंटेल ने भी अपना एक निकाला लेटेस्ट, आई थिंक रैप्ट्रा लेक, सीरीज। तो कहां से कहां पहुंच गए हम? कहां से शुरू किया था वैक्यूम ट्यूब, और कहां लैप्ट्रा लेक और AMD राइजन और 7000 सीरीज की बात कर रहे हैं, मेमोरीज की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो यहां पे चीजें, अब दो तरह के एप्लीकेशन है जो हम सब यूज कर रहे हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एक्सेल की बात आप करेंगे, एक्सेल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसको उस पर शो कर सकते हैं, पीपीटी करो उसको। हाँ, एक्सेल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? है विंडो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इज अ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी है वो सारा, वो हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा जितना भी अभी जैसे एक्सेल वाला यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजर फ्रेंडली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजर फ्रेंडली एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सिस्टम फ्रेंडली। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं फॉर योर पर्पस, वो सारे के सारे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो एक पावरफुल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, द बंडल सॉफ्टवेयर। बंडल सॉफ्टवेयर है वो, ऑफिस में जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनके लिए उन्होंने बनाया था एक ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बंडल सॉफ्टवेयर, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, एक्सेस। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूजर्स के लिए। तो वो सारे के सारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम यूज करता है सिस्टम प्रोसेसिंग के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, ऐसा वो सारे के सारे इसमें ही होते हैं। ठीक है। वेरी गुड। तो अब एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक बैकबोन है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यू बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। बैक एंड में आप जाके देखेंगे, बैक एंड में तो इसी तरह से वो सारे के सारे एक्सेल का फीचर है। जैसे अभी एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, ये वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट MSP। MSP में जब आप बैक एंड में देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली सेम एज एक्सेल। तो एक्सेल आप लोग को बेसिक और एडवांस यूज करना आना चाहिए। यहाँ भी आप जब तक स्टेज रहेगा आपका 2 इयर्स तक, आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाएगा। वो प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट पे कहा जाएगा, डिफरेंट डेटा एनालाइज करने के लिए आपसे कहा जाएगा, कुछ डेटा को मैनेज करने के लिए कहा जाएगा। उसके लिए आपको एक्सेल यूज करना आना चाहिए, वर्ड यूज करना आना चाहिए। क्योंकि आज के दिन में आप नहीं कह सकते कि सर मुझे एक्सेल नहीं आती है, मुझे वर्ड नहीं आती है, मुझे पावर पॉइंट नहीं आती है। वो तो आप नहीं कह सकते हैं। आपके ही सीनियर्स में से बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, आप उससे हेल्प ले। बहुत जबरदस्त एक्सेल में उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का पूरा काम किया, डेटा को एनालाइज किया। क्योंकि डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब वो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। अभी मैंने आपको बताया। तो एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल है एक्सेल। तो एक्सेल का एक बेसिक आप सबको, ये सारे कुछ फंक्शंस, एक्सेल जो है हमारे इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन एक पावरफुल टूल्स है। आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम को भी
1 मिनट में फंक्शन से कर सकते हैं, है ना। जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जैसे रॉड फंक्शन है, आप सब, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको MIS, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्लास के बाद मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको एक एक सारे फंक्शन की, और एक्सेल के ऊपर मैं आपका MIS दूंगा। MIS वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, समझ में आ गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी हमने बताया, तो आपका एक पेपर है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लिया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पार्ट कवर अप हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच हेल्प्स मैनेजर टू डू देयर टास्क स्मूथली, है ना। तो ये सारे कुछ फंक्शन होते हैं, राउंड फंक्शन, और ये आप जब खोलेंगे वर्कबुक, किसी तरह से वर्कबुक आएगी आपकी, ये सब आप लोग तो फेमिलियर है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। ये सारे एक एक टूल्स जो है इसमें क्या क्या कहलाते हैं, टूल्स जो है सारे सब आप जानते होंगे, है ना। ये सब आप जानते हैं, सब सारा क्विक एक्सेस। लेकिन आप जब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक और है प्रोजेक्ट, उसको जब आप खोलेंगे तो बैकएंड में आपको सेम स्क्रीन दिखेगा, सेम सारे फंक्शन है। ये फाइल टैब, रिबन, टाइटल बार, एक्सेस बार, रो बार, कॉलम बार, यहाँ पे व्यू बटन, सारा कुछ सेम है। तो क्या पता चला इससे कि वो जो बिल्कुल यूएस और यूरोप के मार्केट में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिसका बेस एक्सेल है। आपको कहा जाए एक्सेल में बैक स्टेज व्यू जानते हैं, बैक स्टेज व्यू पता है आपको, बैक स्टेज व्यू नहीं, एक्सेल में एक बैक स्टेज व्यू होता है। जैसे आप फाइल पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे फाइल है, इस पे प्रेस करेंगे आप पहुंच जाएगा बैक स्टेज व्यू में। बैक स्टेज व्यू में वो सारा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, आप सारे डिफॉल्ट जो भी है, टेम का जो टाइम है, डेट है, इसका जो फॉर्मेट वगैरह वो सब चेंज कर सकते हैं, प्रिंटिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, करेंसी का साइन चेंज कर सकते हैं। ये बैक स्टेज व्यू आपको मिलता है, ये है बैक स्टेज व्यू। देखिए ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे, और एस्केप प्रेस कर जाइए आप, फिर वापस आ जाइएगा अपने नॉर्मल व्यू में। तो दो व्यू मिल रहा है आपको, एक फ्रंट व्यू है, बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू, फाइल पे क्लिक किया, बैक स्टेज व्यू, फिर एस्केप प्रेस किया, आप फ्रंट व्यू में आ गए। तो ये बेसिक है, आपको तो जानना ही जानना है सारा चीज़ें। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें जो फाइल जो टैब है, एक टैब है इसमें, तो रिसोर्स उसको देखिए कहाँ पे है, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सब टैब कहलाता है। ऊपर में जितने ये सब टैब है, ये सारे टैब्स है, और इसको हम रिबन कहते हैं, जो स्क्वायर सा बना हुआ इसको रिबन कहते हैं। तो टैब है, रिबन है, बटन है, और इस तरह से आप बैक स्टेज व्यू में जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे अपनी। ये सारी फाइल ओपन है तो ओपन कर सकते हैं, सेव, व्यू, ट्रांसफर, प्रिंट, एवरीथिंग यू कैन डू। प्रिंट करना है यहाँ से कीजिए, सेव करना है, ट्रांसफर करना है, ईमेल करना है, शेयर करना है, व्हाटएवर यू वांट। बैक स्टेज व्यू में सारे ऑप्शन है, बैक स्टेज व्यू में आके आप उसको देख लीजिएगा, ये सारे ऑप्शन है बैक स्टेज व्यू में। तो ये तो चीज़ है प्रैक्टिस की, आपको मैं स्लाइड भी प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में हम मिलेंगे। ये सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको बैक स्टेज व्यू में, ठीक है। अब दो चीज एक्सेल में आती है कि वर्कबुक ऐसे वर्कशीट, फर्क है दोनों में या दोनों सेम है? वर्कबुक, वर्कशीट, कोई फर्क है या सेम है? फर्क है ना। वर्कबुक है कंप्लीटली बुक, जैसे इसको आप ऐसे करें कि वर्कबुक लाइक अ बुक, एंड पेजेस जो उसके अंदर है वो वर्कशीट है। ये किताब है, बुक है, बुक में जो पेजेस होते हैं वो है वर्कशीट, जो बुक है कंप्लीटली वो है वर्कबुक। तो एक्सेल जो फाइल बनाते हैं वो है वर्कबुक, एक्सेल में जो आप शीट ऐड करते हैं वो है वर्कशीट, ठीक है। शीट ऐड, इसका जो टैब आप देख रहे हैं ना, टैब शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये सारे शीट्स हैं। और ये जो पूरी एक फाइल बन गई है, ये एक वर्कबुक है।
ये शीट पे भी ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, शीट को मूव कर दिए, सारे इसमें दिया हुआ ऑप्शन, देखिए ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। नई शीट इंसर्ट करना, इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं, व्यू कोड है, ठीक है। टैब कलर एक इंपॉर्टेंट इसमें एक है, टैब कलर आप घर पे इसको जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। टैब कलर, ये देखिए टैब कलर, ये सारे जो शीट्स है ना, अब आप चाहते हैं कि आपने अपनी वर्कबुक में 3-4 शीट्स बनाई है, अलग अलग पर्पस के लिए आपने बनाया है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपने बनाया, आप कलर कोडिंग भी कर सकते हैं उसको, एक को रेड कर दीजिए, एक को ब्लू कर दीजिए, एक को आप येलो कर दीजिए, तो कलर कोड से शीट को कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल खोलिएगा, वर्कबुक खुल गई, वर्कबुक के अंदर में शीट मिल गई, शीट को आप डिफरेंट डिफरेंट उस पर वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा चीज यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ। कॉपी कर सकते हैं, मूव, हाइड, अनहाइड, है ना। जैसे आप शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक बहुत ही पावरफुल टूल है, राइट क्लिक में आपको सब दिया हुआ, हाइड, अनहाइड, इस तरह से करके शीट को आप हाइड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारा यहां से भी आप कर सकते हैं। टैब कलर जो भी आपको बताया, चेंजिंग द टैब कलर, चेंज, ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, 2-3 शीट को कंट्रोल प्लस टैब से एक साथ ऐड कर दिए तो शीट ग्रुप बन जाएगा, एक शीट में चेंजेस कीजिएगा, दूसरी शीट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप में आ गया है। तो ग्रुपिंग वर्कशीट हम कर सकते हैं, फ्रीजिंग रो एंड कॉलम कर सकते हैं, कोई रोज एंड कॉलम हम तो समझते हैं ना, इस तरह से हमारे कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो हमारे रोज होते हैं, वर्टिकली हमारा कॉलम्स होता है, हॉरिजॉन्टली हमारा रोज होता है। तो आप चाहते हैं कि रोज एंड कॉलम को फ्रीज कर दें, कोई डेटा है आपके ऊपर में है, आप चाहते हो बाकी सारा स्क्रॉल हो जाए, वो रहे आपके स्क्रीन पे, तो आप उस पार्ट को फ्रेम कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऊपर में जो है रो को फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, तो फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है फॉर्मूला एंड फंक्शन, ये फंक्शन आप लगा सकते हैं एक्सेल में, जो कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स काम को विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, 5 मिनट में, 4 मिनट में आप काम करके दिखा सकते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं। ये एक फिलिंग है सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से, जैसे आपका दिया हुआ जनवरी, जैन लिखा, जनवरी, मंडे, इस तरह से करके, अगर ये इस तरह से प्लस है, इसको आप ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, तो वो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक वो सीरीज फिल हो जाएगी। यहाँ पे है जनवरी, इसको नीचे भी इस तरह से प्लस पॉइंट आ जाए, प्लस पॉइंट को ड्रैग कर दीजिए, तो जनवरी, फरवरी कंप्लीट सीरीज फिल हो जाएगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है एक्सेल में, आप सीरीज को फिल कर सकते हैं, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपको पूरा लिखना है जनवरी तो जनवरी लिखिए, जैन फेब लिखना है तो जैन फेब लिख दीजिए, एज यू लाइक। इस तरह से जो भी अगर आप कर रहे हैं, Q1, QTR1, Q1, फर्स्ट डे, इस तरह से आप जो भी चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पूरी सीरीज आप फिल कर सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज, प्रैक्टिस कीजिए, स्लाइड भी आपको दे देंगे एकदम सेम। अब फंक्शन जो इसमें है, बहुत सारे फंक्शन एंड फार्मूला, वो आप सब जानते होंगे, बेसिक फंक्शन इसमें है, वो जैसे एक्सेल में किसी भी, एक्सेल की एक सेल होती है ना, एक सेल है, तो एक सेल में जब फंक्शन लिखेंगे तो आपने इक्वल साइन से फंक्शन शुरू होता है, इक्वल टू लिखेंगे साइन, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे। तो ये फंक्शन जैसे मान लीजिए सम है, मैंने जैसा आपको ये स्लाइड बनाया है ना, अगर मैं स्लाइड आपको दूं तो यू कैन प्रैक्टिस इट वेरी वेल। इस तरह से सम कर सकते हैं आप, ये रेंज है, रेंज है, ये आर्गुमेंट रेंज है, A1 से A20, तो अगर आपने A1 से A20 में कुछ लिखा है डेटा, उसको सम करना चाहते हैं, तो आप सम फंक्शन से उसको सम कर सकते हैं। आप इस तरह से सम A1 A20, वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाँ अभी है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ घड़ी, ठीक है। सम इफ का एक फंक्शन आता है, सम प्रोडक्ट का एक फंक्शन है, सम प्रोडक्ट, दो सेल में अगर है तो उसको प्रोडक्ट करके सम कर देगा, तो सम प्रोडक्ट, सम इफ, एवरेज, काउंट, काउंट, काउंट और काउंट ए, ये फर्क है इसमें। काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, काउंट ए टेक्स्ट को भी काउंट कर देगा। एक होता है काउंट ब्लैंक, एक फंक्शन ये भी है काउंट ब्लैंक, लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं है काउंट ब्लैंक, अगर आपकी रो में कोई ब्लैंक भी है तो ब्लैंक को भी काउंट कर लेगा, काउंट ब्लैंक।
काउंट सिर्फ काउंट करेगा नंबर, काउंट है नंबर एंड टेक्स्ट बोथ। अगर काउंट आप यूज कर रहे हो बीच में कहीं टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। काउंट ए नंबर एंड टेक्स्ट सबको करेगा, काउंट ब्लैंक सबको ब्लैंक को भी कर देगा। काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एक होता है कंडीशनल, काउंट इफ सेल नंबर ग्रेटर देन 50, तो जो 50 से ज्यादा उसको काउंट करेगा। ये मैंने आपको जो दिया हुआ है काउंट इफ का नीचे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको सेव जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर यू विल गेट द आंसर। वेरी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली मैंने बनाया स्लाइड। काउंट इफ राउंड फंक्शन, राउंड आप चाहते हैं बिल्कुल राउंड कर दे, सारा पॉइंट डिसिमल के बाद कोई पॉइंट नहीं दे तो राउंड कर दीजिए। एक पॉइंट देना चाहते हैं तो एक लिख दीजिए 1, एक पॉइंट रह जाएगा तो ये आपका आंसर रहेगा। ये राउंड कर दिया 0, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट के बाद नंबर हो तो 0, तो ये सब हट जाएगा, राउंड हो जाएगा। सम इफ फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है, मिनिमम इफ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं एंड के साथ। इफ एंड ये कंडीशनल है कि अगर ये और ये दोनों फिल हो तो आप सम करें। इफ एंड की ये कंडीशन है, और भी कर सकते हैं एंड भी कर सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशन है एंड और। फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, आप ये दो लुकअप करेगा, हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड वर्टिकल लुकअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप, कोई भी आप जैसे इस तरह का टेबल है, इस तरह के टेबल में आप कोई एक डेटा चाहते हैं कि भाई डी का मैनेजमेंट का मार्क्स क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा। तो दो तरह से लुकअप कर सकता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, स्लाइड को देख के क्लियर हो जाएगा आपका, मैं आपको बता दूंगा। वर्टिकल लुकअप भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप भी कर सकता है, दो तरह के लुकअप करेगा ये। डेट टाइम ये सारी चीजें हैं, ग्राफ है, ये है वो है। दैट्स नॉट द थिंग वी शुड बी कवर इन जस्ट हाफ एन आवर, बट एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है, इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का बता दिया है कि आप जो बिजनेस में जा रहे हैं, जिस वर्ल्ड में जा रहे हैं, वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो लिया, आप ईआरपी पे काम करने वाले, आपको आना चाहिए नॉलेज, सैप क्या होता है, जेडी एडवर्ड्स क्या होता है, आप किसी भी मॉड्यूल पे काम करना आपको आना चाहिए। आप फाइनेंस मैनेजर हैं, हार्डली मैटर, आपको फाइनेंस का मॉड्यूल जानना है। आप एचआर मैनेजर हैं, एचआर का मॉड्यूल आपको जानना है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मॉड्यूल है। ईआरपी आपको जानना है, ईआरपी की आप बहुत सारी चीजें हैं। मेरे साथ आप दो बिताइए पूरा सेशन, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू एज मैक्सिमम नॉलेज एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir, for your expertise. Now let's take a short break. Do you want some break or speeches करेंगे? ठीक है. Okay, we are going to have some management quiz. Normally आपको आंसर देना है, ठीक है? जो आंसर सही देगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा. There are rules, कोई मम्मा नहीं करेगा. हैंड रेज करना है, जो हम बताएंगे वही आंसर देगा, ठीक है? हाँ, माइक तुम बोल रहा. Just a second. Yes. Yeah, please. Jogo. ठीक है, स्टार्ट करें. रेडी? यू डोंट हैव टू मर्मर एंड हाथ ऊपर करो, कुछ नहीं मिलेगा. So next. नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? डोंट मर्मर. बीच में किसी को भी किसी को नहीं मिलेगा. अजल उधर. That white shirt, corner.
हाँ नो पीछे 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 नेक्स्ट ना एक्स ही तो है तुम्हारा सही है बट इनकम्प्लीट है। एक्स ही तो है क्या सर? नो स्पेस एक्स टू टाइप तो सही है एक्स है ना दैट वो पीछे वाला हाँ उसने एक्स ही बोला था तो दे दो उसे। ठीक बोला है इधर आ जाओ। हाँ। सर आप लेट हो गए। Next दोनों आ मैं जाओ बताऊँ। दोनों आ जाओ दोनों आ जाओ नाम क्या है आपका? माइक बोलो 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 So my name is Moni Guzan. Hello everyone, myself Tahmeen. ठीक है Thank you. next चलिए। okay the next one That blue one. Other blue third row. third row blue करेक्ट आ जाओ अरे बुलाओ तो सही भेजना बुलाओ बुलाओ। ओके Please pronounce it again. No, granite. Yeah, better. ठीक है, हाँ. okay the next question the next slide any guesses No one? Afzal Bank of America. nah Anyone else? Sir? Asad sir Abdullah sir? no one no guesses Pass? okay then pass it's JP Morgan Chase okay the next anything नहीं पीछे पीछे वाला ना इन दोनों को किसको लास्ट लाइन मैं उसको बुला रहा हूँ तुझको Versace. काम अच्छा भाई नाम भाई बता सर। दो My name is Anushka. नेक्स्ट फेमस सोशल मीडिया ब्रांड आप दो अब हो चुका आप बताओ नहीं नहीं अफजल अफजल अगर किसी को नहीं आता फिर तुम्हारी बारी है हाँ कोई से भी Reddit. या राइट नो फीमेल आंसर्स कोई भी नहीं My दे name is Madhika. Madhika. नेक्स्ट okay next that girl अच्छा गर्ल को Girl, तो girl, बहुत girl. टाइम बाद नहीं नहीं सर ठीक है बता दो कैसा correct चॉकलेट नहीं लगी okay wait पीछे दैट Hey, रेड the red shirt Afzal अफजल पीछे last row Norton. राइट name नाम name बता name दो My name is Pradeep Khan. अच्छा अमान शाह बताओ अच्छा Parker. राइट Sajid Khan. that तुम्हें that कुछ नहीं मिलेगा तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो that girl behind him that girl behind him Afzal आपको जवाब देना है द रेड
पीछे 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 देना है? खत्म। दूसरा दूसरा स्पॉट तो ये दूसरा पैटर्न हाँ प्लीज रिपीट नो नो एक और नहीं बीच में नो कंप्लीट 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 नहीं। आगे Aramco is correct, but आगे कुछ नहीं आगे है Saudi Arabia. या राइट I am calling it as. इस आलिया भट्ट से आप अभी टेलीकम्युनिकेशन ये दोनों हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, हो चुके हैं ना उधर वो भी हो चुका है। कोई नया गर्ल्स गर्ल्स किसी को नहीं पता यार इधर भी है हाँ यार इतना तो बीच वाले And that, observe that specs वाला। हाँ बीच में रेड वाला सर इधर इधर बीच में रेड वाला Sir, middle मिडिल में में जो बैठा है अमन, अमन सर ये साढ़े अच्छा हो गया क्या? हो गया तो कोई बचा भी नहीं। हो गया हुआ है। हुआ है राइट वाओ ओके नाउ दिस ओनली गर्ल्स विल आंसर एक ना तो पता होगा यार यार तुम्हें तो क्लोथिंग ब्रांड कौन नो आंसर आर्यन खान्स क्लोथिंग ब्रांड। आर्यन खान को तो है। नाम बताओ ना असद सर, सर आप पे पास होता है आपको पता है आपने देखा भी है ऐसी बना के आपने डाला होगा डिफरेंट आपने दो इवेंट दिए दे नो आर्यन खान का ब्रांड बट नाम तो बताओ आर्यन खान्स क्लोथिंग ब्रांड। क्या बताऊं? लड़कों को पता है किसी को ये सबको पता है। पता है दो आप लोग कदम स्लाइड राइट आंसर वेरी सही That's what it. That's it. So next. मेमोरी गेम खेले अमन खेल लो चलो ठीक है अभी हमारे पास और टाइम है हमारे को तो मेरी पार्टिसिपेट हम कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा मैं बताओ छोटी सी गेम खेलेंगे 5 लोग वॉलंटियर आ जाओ कोई भी आ जाओ इतना मुश्किल नहीं है ये ऊपर आएगा लगाएगी कुछ नहीं है कल की तरह नहीं करवाएंगे हम जो कल हुआ है आ जाओ कम we need at least 5 answers कम ऑन गर्ल्स कम ऑन ये थोड़ा मेमोरी गेम है तो तुम आ जाओ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कम ऑन आ जाओ तुम कोई भी आ जाओ काम 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 वन टू थ्री फोर वन मोर आ जाओ Aman. Okay, guys, please introduce yourself. Hello, myself Dalil Shah. Myself Aliba Fatima. myself Anisha myself Devi myself Mohammed ठीक है अब हम नॉर्मल मेमोरी गेम सुना है तुमने शी इज गोइंग टू से वन वर्ड आप इनका वर्ड बोलोगे और अपना ऐड ऑन करोगे आप इन दोनों का रिपीट करोगे फिर ऐड ऑन करोगे आप इन तीनों का रिपीट करोगे व्हाट इज कोई क्वेश्चन ठीक है स्टार्ट करें कुछ उल्टा सीधा मत बोलना नॉर्मल वर्ड कुछ भी बोलना और ठीक है स्टार्ट काम ओके स्टार्ट नहीं नॉर्मल
ये वाला repeat her word and then add on. Umbrella. First umbrella and then yeah. Rain. Umbrella, rain, raincoat. Umbrella, rain, raincoat, shoes. Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud. Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud, drops. Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud, drop. Anything, कुछ भी बोलो. Rainbow. देखो गेम बोलना है नहीं बोलना. Umbrella, rain, raincoat, shoes. गलत. Wrong. Okay, चलो next. Umbrella, rain, raincoat, shoes, clouds, drops. Rainbow, fires. Oh, don't murmur. आगे तो आगे खेलो, don't murmur. Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud, drops. Rainbow, fire. Cheer. Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud, drop, rainbow. जल्दी जल्दी. और दो यार फिर मैं बिठा दे रही हूँ तुम मत ही खेलो छोड़ो. Rainbow, fire, chair. आप किसी ने मम्मा rain, raincoat, shoes, oh yeah, next. जल्दी जल्दी. Umbrella, rain, raincoat, shoes, clouds, drops. Rainbow, fire, chair. मतलब इस तरह एक्ट वाला जिससे तुम लोग को भी थोड़ा सा वो आओ. मैंने ऐसी चॉकलेट मिली है Umbrella, rain, raincoat, shoes, cloud, fire, chair. out. Okay. What's umbrella, rain, raincoat? She already won with us. Thank you. तुम्हें और खेलनी एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करोगे तुम? डन. ठीक है. ठीक है, we need 3 boys and 3 girls. Please participate. You are marrying my student. If आओ, कोई नहीं देगा. you see any opportunity, please grab it. कौन कौन अभी हाँ बोल रहा था? आओ. अगर ले लो तुम अपनी मर्जी से. नहीं नहीं यार तुमने खेल लिया मेरे को. We also need girls participate. सर आ जाओ, आप भी आ जाओ. स्पीच सर और लोग आप दोनों आ जाओ जल्दी से. सर आप भी आ जाओ अगर आप फ्री हो. शफीक सर और आप आ जाओ. Sir, please. ले आए आप. एक गर्ल और एक बॉय और. अरे एक लड़का और एक लड़की कोई भी आ जाओ. हाँ वेरी नाइस. काम एक कोई भी लड़की आ जाओ, इतने सारे हो. वेरी
Very nice. Time हो गया यार इतना जल्दी. Hello, I'm Maurice. Hello, myself Akash. Good morning, everyone. My name is Malvikar. Another this side, myself Eva. Hello everyone, myself Anmashmi. Okay, this is boys versus girls. ठीक है, दमशराज खेलेंगे. आपको हम इंग्लिश मूवी बताएंगे, आप गेस करेंगे. एक्ट कौन करेगा? पहले बैठो. एक चूज करो दोनों टीम में से एक. Come on guys, जल्दी जल्दी. अभी और स्पीचेस सुनने हैं आपको. अरे गर्ल्स का कर देते तुम लोग पहले डिसाइड करो. एक काम करेंगे पूछा दोनों पहले सीधे करेंगे जो पहले करेगा ना गैस करेगा वो एक आ जाओ. एक आ जाओ कोई भी. अरे आओ. ये तुम उधर लेके जाओ. टीवी मूवी बताओ. अलग अलग बताओ. अलग अलग बताओ. ये आ जाओ. अरे तो क्या हुआ? आ जाओ. रेडी हो? आप उधर आ जाओ. अच्छा वो स्टार्ट करो. आप लोग ऑडियंस की तरफ फेस करो. आप दोनों ठीक है you know तो जो पहले कैसे कर लेगा वो भी जीते. ठीक है ना. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एक्शन की बात करना है. You have to just do this gesture. No verbal communication. बोलना नहीं थोड़ा दूर हो जाओ. बोलना नहीं सब कुछ नहीं तो बोला. एक्ट करो. टेप लगा दो. ताली तो बजा दो तुम. दो करनी है. क्या करना अच्छा हाँ, कौन फर्स्ट को पार्टिसिपेट करेगा? फ्लोर हो गया तो गूगल को आगे तो कौन कौन इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेशन में? किस चीज में? सिंगिंग और We need maximum participation. It will be a very awesome event. किस में? सिंगिंग दोनों. ठीक है. Can you show us some talent of yours? This stage is yours. Come on. If someone is interested in acting or doing something other activities, you are most welcome. क्या चीज?
Come on guys, ताली जब बजाओ. जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया ओ जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहाँ से हमें हूँ गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू खेती है तुझसे किस्मत की लकीर आंखों में दिखता था प्यार तेरी ही आदत बस बन सी गई चाहत का ऐसा तापमान नींद न आए रातों में फिर बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में It was a nice performance. Anyone else who want to perform something? Yeah, most welcome. सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आज़मा
जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं, जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो, वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूसरा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तू रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Yeah. Now we would like to welcome upon the stage provost girls Miss Helen Samam, Associate Professor of Department of Management, Jamia Hamdard. Helen Samam, she's not here. Ma'am, बाहर है. Helen Samam, Associate Professor of Jamia Hamdard. She has done her PhD in management and area of specialization includes IT, management and sustainable development. Please give a big round of applause for ma'am. Assalamualaikum and very good afternoon to all of you. And I am Provost Girls and I am basically looking after all the girls hostel of Jamia Hamdard. And besides that, I am also a teacher here and my specialization is international business and I will be teaching you one paper in your first semester plus those who opt for international business as their major and minor. So I will be teaching you in third and fourth semester also. So apart from that, I am provost, so today I will be talking about the girls' hostels which are there within campus. So basically we have 5 girls' hostels here and these are the 5 girls' hostels. Ibn Sina, Jawaharlal Nehru Hostel, Annie Mary Hostel, Abdul Muiz, which is called as AMHR, and Rabia Girls' Hostel. So first is Ibn Sina. I'll just give you a brief of all the hostels because I know that those who want hostel, they've already opted for the hostel and those who have not opted for hostel, so for them it's not relevant. So I'll just give you a brief of what all hostels we have within the campus. Ibn Sina is a non-AC hostel where we have double and triple seater non-AC rooms. Then we have Annie Mary. Annie Mary is an AC hostel. All the seats, 67 seats are there. All the seats are AC. There are double seater AC rooms in Annie Mary hostel. Then we have AMHR. In AMHR we have single seater and double seater AC rooms. Plus we have dormitories also. Then we have Rabia hostel. This was created just because the previous hostels that I discussed with you, they were not able to fulfill the demand which is there for girls' hostel. So Rabia hostel was created. This is just a temporary arrangement where we give hostel to the students so that in case if they are not getting hostel in AC or non-AC, then temporarily they get
6 months or 1 year. And once we get the seats and non-AC and AC rooms, then we shift them to those hostels. Then this JLN hostel was created last year only because of, again, there was a demand for AC hostel. And this is completely AC, fully AC, and all rooms are double seated. Admission is on first come first basis. Basically, if student is from Delhi or NCR, so they are not provided until and unless we have seats. Mostly we give seats to students who are coming from far off places. Like I told you, we have AC and non-AC and dormitories. So AMHR is AC. This is a fee structure. Then Annie Mary Hostel, Ibn Sina, Rabia Girls Hostel, and JLN Hostel. So this is a fee structure of all the hostels. Hostel infrastructure, basically all the facilities are there, like you have your dining space, laundry is there, and your mess is compulsory. Then all the facilities which are inside our campus, like your gym, your sports complex, or other facilities which are there, that is available for similar. We also have a hospital within campus, and these services are provided to our students which are there in hostel. This is hostel administration, provost, assistant provost, and wardens of various hostels. We also have students committees to manage hostels, like we have sports committee, students welfare committee, food committee, literary and cultural activities committee, disciplinary committee, and environmental committees. These committees were created just so that students have say in the management of hostels. So all the students, like this, these committees are created for 1 year, and once, like if students are comfortable, then they can carry on other year also. Otherwise, they are replaced by new students. So this is a glimpse of hostel function that we organized last year. Every year we organize hostel function or hostel day for both boys and girls. And these are some of the activities and sessions which are organized in hostel. So that's all about the girls hostel of Jamia Hamdard. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your expertise. Now we would like to call Dr. Shanawaz Abdin Sir, Associate Professor, Department of Management, Jamia Hamdard. He is also serving as the Provost Voice. Sir, please, we would like to guide you through. A very good afternoon to one and all. Thank you so much for this platform that we are able to throw some light on the hostel life. Though we have a greater facility for girls, the boys' hostels are only two in number. One is Jawaharlal Nehru International Hostel and the other is Ibn Battuta Hostel. But the facilities, infrastructure, and other activities will remain the same. It's just that because of the ladies and men's wing, we have two different provosts. Charges are by and large the same, but happily or unhappily, I cannot say that. But this time, most of the rooms will be given to students from MBBS because they have to be accommodated. So we have almost no seats for students of management or some other courses. So unless we get an approval from the authority, till then we cannot decide on such courses. Anyway, you can still have interaction with other hostelers if you want, in other courses, in other programs, and try to make the most of your campus life. Discipline will be by and large very prime. You must ensure that if you interact with somebody, you have a meaningful conversation, you don't talk anything indecent to them, you don't indulge in any kind of a mudslinging, no political opinions being forced upon other people, no religious comments, caste comments. So that is what you have to ensure, even if you want to interact with hostelers. Rest, whatever ma'am has said, that holds true for the girls' hostel. For boys' hostel, we'll maybe plan more seats from the next year. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your guidance. Our next guest has an extraordinary ability to inspire, motivate, and lead. He has worked as an area sales manager in HCL Infosystem, as a sales specialist in Panasonic, a journey encompassing 25 years of rich learning in IT domain. I would request Shanawaz sir to facilitate Mr. Ansari sir.
MBA. Good afternoon, everybody. Uh, I don't know whether I'm really somebody who should be called to an educational institute. Uh, my educational journey has never been so good that I should be addressing people and addressing the August gathering over here. But anyway, I'll try my level best. And unfortunately, I came to know about this only yesterday, so I haven't prepared anything per se. But anyways, there's a, I can see a bunch of people now coming into their professional course and probably embarking on a journey where life itself will be the biggest teacher to you in the next couple of years and moving ahead in your professional life and while you interact professionally with the world. A very different scenario till the time you were studying or you were in part of educational institutes and living at home, and it's a very different world. And slowly and slowly, obviously, you understand and you learn about it. I've had a very enabled us to ensure that we could take a lot of students from here on board, not just in my company, but there were other areas also where we could facilitate them or recommend them. And so the subject given to me today is on communications, and which I personally have always believed that is perhaps one of the most important factors in the development of any individual, and much more important when it comes to management courses or life in the corporate world. Because generally in our kind of an environment, your entrance, your impression, your first interaction, your first interview, your first seating in front of people who really count is what matters as to how much you are able to grow. You could be a hard worker, you could be a very capable engineer, you could be a lot of things. But if you cannot communicate it properly and you cannot impress it upon the people who are relevant, it comes to a naught. And I've seen a lot of people, unfortunately, not progressing as much as they were capable of just because their communication skills were not up to the mark. And when I say communication skills, it is not about your competence or your capabilities with respect to the command on the English language. It could be a small portion of the entire thing, but not the complete picture. Yes, if you know a language properly, why not? It will always be helpful. But to limit yourselves to the extent that you get into a shell feeling that, oh, I have this handicap with me. It is not really a handicap. The handicap is all in your mind. It is all about the confidence and the self-belief that you have with respect to the capability to convey what you want as crisp and as clear as possible. In today's age and times when everything gets recorded, everything can get you into trouble, when there are so many things happening around you which are beyond your control. We just had an incident about 4 or 5 days back where the teacher had actually lost his job while to me, he was only saying that you should prefer educated people to run your country. Now, I don't know what was so bad about it. But then these are times, like I said, you have to be very cautious about it. And not just cautious, it is also about the criticality and the understanding of the timing of what you're saying. In the corporate world and in the not just the corporate world, when you are out as a professional, it counts, and there are so many areas where your communication will actually be able to save you. It will also be able to facilitate you in so many areas where probably your knowledge on the subject is limited, but you will still be able to create a niche and space for yourself. And see, I spent all my money that I got for books during my MBA at the Mohan Nagar Dhabas. So
I don't have too much of an academic viewpoint on a lot of issues. But yeah, the practical aspects of the ability to communicate properly, have confidence, have self-belief in whatever you are conveying, well backed by data, statistics, and all those things obviously counts. But yeah, uh, as a human being and obviously interacting with co-humans, the backbone of all communication is the human touch and the human angle that you bring into your discussion and your communication. That is very crucial. And let me tell you, if you are a good communicator, if you are a confident communicator, if you have that self-belief in you, if you have the capability of making eye contact and talking, nothing is going to stop you. This is very, very critical. I keep on emphasizing it at various platforms wherever I get an opportunity, that even as part of your curriculum or as part of your academics, this should be one of the most important aspects that should be looked into, especially management. Every week, students should be asked to stand on the podium and speak for 15 minutes. Language should not be a barrier, whatever language. But people should be encouraged to come on the podium, to speak in front of 10 people, to be able to communicate on a one-to-one. See, these things are inherent to your preparation of actually facing people who don't know you. So the entire initial impression that you're going to create, whether it is your employer, future employer, your future customer, your probable business associate, it is all, the entire initial vibes are dependent on the way you communicate with them. Plus that human angle. You should always be cautious about and be very, very uh, sensitive about the human angle involved in whatever conversation you're doing. Be very, very sensitive about what you are communicating, whom are you communicating it to, what kind of a relationship do you have, what is the platform on which we are interacting, how formal or how casual the interaction can be conducted. Very important factors. And these are, like I said, I mean, more than the academic requirements of this all, these are all practical requirements that you will have every day of your life. And there are so many scenarios. I'll give you a couple of actually live examples to make you understand better. I was doing a project. By the way, my background is that I've done a lot of communication and IT projects for defense and the police department in India. So I was doing this video conferencing project for Tihar jail, and there was a technical director who was in charge of jails at National Informatics Center. His name was Mr. Rajiv Saxena. He belonged to Lucknow, incidentally my hometown. Very fond of poetry and all. So, in the first couple of interactions, I understood that to spend time in this room, you need to talk about poets and quote a lot of couplets rather than talking about Tihar jail. The Tihar jail interaction would finish in 5 minutes. और शायरों की और शायरी की बात करते रहिए तो आपको 35 मिनट बैठने को मिलेगा और 2 बार चाय मिलेगी. ठीक है, तो काम की बात तो हो रही थी 5 मिनट, लेकिन that bond that we created and still exists. He has retired. He used to forward me the details of the mushaira and ghazal programs that were being organized across Delhi. और फिर कहते थे कि वहाँ पे मुलाकात होगी. So you never know. I mean, there are things which come out of nowhere, and you create a bond. I was responsible to implement the solution. He was responsible as a government representative to ensure that it is done. But we got a common platform in absolutely something which was
eccentrically different from the subject that we were meeting on. So these things happen, and these things will definitely happen. Whosoever is sitting in front of you has got a different life. He has got a personal life, he's got a professional life, there are so many facets of life. You never know where exactly you might be able to bond with people. So, talk with an open mind. Don't limit yourself to whatever has been told to you at home. It might not, it would definitely not be something wrong, but it not might be giving you the complete picture of what reality is. So therefore, remain open to learn. Don't think that whatever your parents have taught you is the end of the world. No. They've given you a platform to understand, think, to apply your mind. So kindly use it. And this 15 minutes of my interaction or 2 years of your course is not going to make you a complete communicator. This is the time you can utilize to improve your communication skills, to improve your ability to converse, to create a human to human touch and bond. And these things are very critical. I am telling you, I stopped working for anybody else about 3 years back. And I founded my own company, and we are running it. We are doing a lot of software integration and hardware integration, again for defense and police. 90% of the business that I am doing right now is solely coming in from my relations that I created during the times that I worked. People who were in uniform at that time, they've retired. They're now working for very big corporates. I am getting business from them. And it is only coming to me because these are all very sensitive businesses. It is only coming to me because they have belief, they have trust. Otherwise, they can call anybody. I mean, they can even call TCS and they'll be standing at their door tomorrow. But I am getting it because we have created a sense of bonding and they have a sense of trust. Right? They're going all the way till the US also to get defense clearances for my company to develop their applications. So it is not happening because I have something which probably is not available anywhere in India. No, absolutely not. It's just that I understand their requirements and they understand that this man is not going to run away. Right? So please work very hard on your communication skills. I keep on impressing it very, very strongly. Unfortunately, most of our backgrounds with the kind of environment that we get probably does not generally encourage working on communication skills, and because we are generally, during our student days, we are generally informal at home and very informal at our schools and colleges. But then probably this is the right time. You need to really brush up and work on this. It is something which is very, very critical for your presentation skills, for your personality per se. What can you change in your personality? You cannot change your looks, you cannot change your height, you cannot change your weight, you cannot change so many things. Weight, okay, you can, I could not. But there are so many things that you cannot change, but this is one thing that is definitely possible. Improve your communication skills. Improve your listening skills. Don't interrupt. Improve your listening skills. And listen not to answer, listen to understand. And then to respond. Don't listen to prepare an answer. No. Listen to understand the point of view. Be open to some other point of view. हम सही हो सकते हैं, लेकिन दूसरा गलत ही हो ये जरूरी नहीं. There could be a middle path, right? So, and there are so many things that you can just it's all about your mind. You have to be open. Let the air come in. जिधर से जो आ रहा है आने दीजिए, प्लीज. उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, you work on what is to be discarded, what is to be retained, what is to be refined. Please, by all means,
But don't close your minds to whatever is coming to you. Please let it come. Good, bad, ugly, whatever. Because that is the reality. It is a combination of everything. So let it come. And I believe all of you are freshers and you just joined. Honestly, I did not read books in my MBA, so I am not a very good ambassador of, telling people how to study or how to. But I can give you a couple of this thing. Generally, you are still not aware as to what life holds for you. Right? When I was in school, computers were introduced. I was in class 8. Computers were introduced in class 6. Right? So we kept on moving. 9th में चले गए, 10th में चले गए, कंप्यूटर पीछे पीछे आ रहा है. ठीक है, पास आउट हो गए साहब, फिर साइंस पढ़ने लगे, लेकिन कंप्यूटर पीछे पीछे, हम आगे आगे. MBA में पहुंचे. I was a student at IMT in Manchester. So obviously all my batchmates were in the same scenario. बगैर कंप्यूटर सीखे आ गए. So my computer lab partner was a Bengali fellow, and he sat with me in the lab. अब आजकल तो पता नहीं आप कनेक्ट भी कर पाएंगे इस बात से कि नहीं. तो उसमें डॉस में कहीं पे लिख के आया कि इनवैलिड कमांड. तो ये जो बंगाली थे, जो सपोजिटली मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे कंप्यूटर में, इन्होंने टाइप किया WHY क्वेश्चन मार्क एंटर. इतना आता था कंप्यूटर हमको. और आप यकीन कीजिए पिछले 25 साल से मैं सिर्फ कंप्यूटर की खा रहा हूँ. I have always worked in the IT sector and I am still doing business in the IT sector. So you never know what life holds for you. Your first or probably the first 2 jobs actually dictate what is the industry that you will always remain in. Right? So therefore one has to be really open about ideas. Idhar kya ho raha, udhar kya ho raha. You are not sure as to where and which verticals or which lines of business you will really be, following later. There could be a couple of people going back to their family businesses, and you never know. But the ideas will remain, right? So it's always good. It's always good, and please look at this facet of your personality. Try and polish it as much as possible. You will benefit so much that you cannot comprehend it right now. I can tell you. You have not seen the world. You will not be able to comprehend the kind of benefits that you have. Be a very good communicator. Develop confidence on communication, and please also be a very, very good listener. And don't listen to answer. Listen to understand and respond. The rest of it is such a big world. I am somebody who can only share my experiences, but then you will have your own fresh experiences. Generations have changed, times have changed. I have, we used to go to school, my school was 7 kilometers from my place. साइकिल मिली थी, मिठाई भी आई थी, साइकिल मिलने. आप में से किसी ने नहीं चलाई होगी. अपनी सोसाइटी में नचा नचा के साइकिल आ गई. तो टाइम्स हैव चेंज्ड. सो फॉर अस इट वाज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? ये हमारी बेटी बैठी है, इन्होंने अपनी साइकिल लखनऊ भेज दी, चलाई नहीं. Because you don't need it as a mode of transport. For us it was a mode of transport. मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ शाहनवाज सर, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इतनी साइकिल्स खड़ी हैं और वो सब सोसाइटी में चक्कर काटने के लिए खड़ी हैं. So times have changed. I don't know whether it is for the good or bad, but that is the reality. Probably children cannot go to school with such distances on cycles now. That could be one of the reasons. So it is not essentially something which is absolutely good or absolutely bad. There could be 100 shades of grey between white and black, right?
And there are. It's all about how you understand them, how you translate, imbibe them, incorporate it into your understanding, and grow your vision. Grow your vision. That's all that is very, very, very important and crucial. Right? And then contribute as best as you can. Contribute to the society, contribute to your neighbors, contribute to your known people, contribute to your to the students who keep on arriving in institutes like this and who would definitely be looking up to their seniors to help them out, to support them wherever possible. It's all a human to human cycle, like I said. I mean, you just have to keep the continuity going, right? We are not even a small dot in the history of times. 10,000, 15,000 years. We are not even a small dot. So just try and improve things around you. Be a good human being. Right? Communicate in a manner that you don't, that you show respect. That's all. I mean, that's about it. Try and be a good human being as much as possible. And generally, if you respect people, there are the chances of you not being respected reduced to the extent of almost being negligible. So it is always better that one introspects and looks at reasons why he's getting abused or why he's not getting respect. The answers, most of them lie with you, inside you. Right? Baki, best of luck. Have a good time over here. I can assure you this is a very beautiful campus. I'm sure you must have gone around it and have a nice time over here. And I'm sure that the faculty and everybody is here to assist you. I'll be more than glad in coming over whenever you want me and giving you my perspective of the industry as well as your preparation with respect to facing your interviews or your live interactions or things like that. And be very actively connected with the industry, even during your 2-year course also. Remain connected to the industry. Try and understand what is happening. Right? And don't jump to the tricks of the trade. Learn the trade. Learn the trade. I'm not dissuading from learning the tricks of the trade, but I'm saying learn the trade in the purest form and then learn the tricks of the trade. Don't jump to the tricks of the trade. Not going to help. You will fall, if not today, tomorrow. Right? Fine. Best of luck. Have a good time. I thank you so much for your time and listening. And like I said, I'm available in industry perspectives, whenever, whatever. I'm always available and I'm very willing to support students for this. Right? Thank you. Thank you so much. Thank you, Asad sir, for your impactful speech that has left us with much to ponder. And we are honored to have share you. Sorry to all of you for having been interrupted. The humility of this person is that he didn't introduce himself much. He has been heading big brands and he has been heading the Department of Management, Jamia Hamdard, with a lot of excellent placements and trainings. There is a branch of businesses called as Toughbooks, the rugged laptops business of Panasonic, for which he headed the third web exim incorporation, the only dealer in India. And he
got our students placed in India, abroad. Some of them are still in Singapore at handsome packages. And the kind of rigor he used to make them go through, it made them world-class managers. So I really wanted to thank him at some platform. Thankfully, it was today. Thank you, Asad sir, for always being there for us. Let's give him a round of applause. And yesterday, he just called me on a casual call. And then I thought that let us utilize this opportunity to introduce him to the department formally, because he was by and large based in NCR, Lucknow. And then he has started his own business now. And he's very much willing to associate with us for trainees, for placements. And the kind of experience he has got is actually mind-blowing. And when I go back to those students and they have those words of appreciation for us as sir, it's just unimaginable. As he said, books will just teach you one part of life, one part of real life. The other is the major, practical exposure, your dealings with people. And as he said, be always polite, humble, and respectful to people when you talk. And then your chances of being insulted are minimized. Although in sales, you have to be sometimes aggressive, sometimes a bit more bold than required. But that does not in any way indicate that you have to lose your decency. You have to lose your politeness. So I would like to use this platform to formally thank Asad Sahab for accepting our invitation at such a short notice of half a day and coming and embracing this occasion with his experience. And what he talked was pure element. In half an hour, he gave the gist of communication. Be relevant, be sensible, be polite, and be a good listener. That is what he said. But this was overdue to him. He has been helping us since 2005 and 6 onwards, till the time I was there in placements, till 2014, 15, I think, 10, 12 odd years. And the only message he gives to our juniors is that you do on the good work, carry on the good work to the next person coming in. And that is how the chain of goodness will continue. So I'll put on record my appreciation and thanks for him, his organization, and we expect similar and rather increased engagement with our department in the coming times. Thank you so much. Thank you, sir. As we come to the close of our orientation session, I would like to express my gratitude to each and every one of you for your active participation and engagement throughout this informative journey. We have covered a lot of ground today, and I hope you are leaving with a better understanding and the opportunities that lie ahead. Remember that orientation is just the beginning. Your journey with us is full of promises, growth, and meaningful experiences. I would also like you people to come more and have more attendance. This is organized just for you. We are giving our time and resources for you people. So thank you again for your time and attention. Have a wonderful day. Thank you so much. It's attendance time. Guests and Akash Kumar Singh, Abhishek Chaudhary,